So hi guys, how are you? It's Dhruv over here, welcoming you all to lightning and amazing session on class 11 chemistry, chapter number 3, periodic classification of element part 1. So please watch the video till the end. So in this chapter, now in lecture number 1, we are going to deal with needs to classify elements, and we are going to deal with different types of periodic tables in which we are going to deal with Doberiner's trend, Newland's law of octaves. Then we are going to see the A, B, E, D, kinetios and arrangement. We are going to deal with Lothermier's table, and we are going to at last deal with the Mendeleev's periodic classification. So let us start. So the periodic table is arguably the most important concept of chemistry, basically for inorganic chemistry, both in principle and its practice. It is the everyday support for students. It suggests new avenues for research to professional, and it's provide an succinct organization of whole chemistry. It is a remarkable demonstration of the fact that the chemical elements are not a random cluster of entities, but instead display trends and lie together in a family. So there's a continuous classification of these elements, and they together lies together in a family. And awareness of the periodic table is essential to anyone who wishes to distinguish the world and see how it is built up from the fundamental building blocks of chemistry, the chemical elements. So we are going to deal why we need to classify elements. We know by now that the elements are basic unit of all the types of matter. In 1800, only 31 elements were known. By 1865, 63 were known, and at present 114 are known. But now it is 118 because the data are some old. Of them, the recently discovered elements are man-made. Efforts to synthesize new elements are continuing. With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and these innumerable compounds individually. To ease with this problem, scientists search for a systematic way to organize the knowledge by classifying the elements. Now, only that it would rationalize only chemical fact about element, but even predict new one for undertaking further study. So we are going to basically deal with the 6 genesis of classification. उसमें से पहला है Proust hypothesis, दूसरा है Doberiner's trend, थर्ड है Newland's law of octave, फोर्थ है Lothermier's classification, फिफ्थ है ABED Calenteurs classification और सिक्स्थ है Mendeleev's classification. So friends, but हमें ये कहना चाहिए कि Proust's hypothesis है वो NCERT के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे डिस्कस करेंगे. He simply assumed that all the elements are made up of hydrogen. Proust ने ये कहा था कि सारे elements हाइड्रोजन से बने हुए हैं. So we can say that atomic weight of each element will be n times the atomic weight of one hydrogen atom. So where n can be any number from 1 to 3 and it can be any integer value, but उसके कुछ drawbacks भी आए. Drawbacks क्या थे? Every element cannot be formed by hydrogen. But this was proved by modern periodic table. Then the second point states that the atomic weight of the element were not found at whole number. As we can see that many atomic numbers nowadays are there. Example, we can take chlorine only. Its atomic number is not a whole number, क्योंकि उसका atomic number 35.5. It's an integer value. So moving further, we are going to deal with the Doberiner's trend. So Doberiner's ने ये कहा था, he was the first scientist to consider the idea of trends among property of element. वो पहला साइंटिस्ट था जिसने प्रॉपर्टीज को कंसीडर रख के टेबल बनाया था. In 1892 he noted a similarity amongst the physical and chemical properties of several group of 3 elements. उसका नाम उसने ट्रेड्स दिया. उसने 3 एलिमेंट्स को ग्रुप किया और उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी पाई. In each cases he noticed that the middle element of each trend has an atomic weight about halfway between the atomic weight of other two. उसने ये पाया कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट का सेट, उसने जो सेट्स बनाए थे 3 एलिमेंट के, उसमें पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज मिडल वाले के बराबर है. सो J.V. Doberiner pointed out within a group of 3 elements similar chemical properties and physical properties, and the atomic weight of the middle element is the mean of other two. हम यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. लिथियम का मास 7 है,
और पोटेशियम का 39. सो 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 23. यानी हम देख सकते हैं कि लिथियम और पोटेशियम का एवरेज मास सोडियम के बराबर है. सो हम दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के लिए. सो बेरियम और कैल्शियम का एवरेज 85.5 है, वो नियरली स्ट्रोंशियम के बराबर ही है. सो अदर एग्जांपल हैज बीन शोन ओवर हियर, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. दो it was the first successful attempt to rationalize the problem, it could not be generalized or extended. यानी ये पहला अटेम्प्ट हुआ था पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इतना जनरलाइज नहीं हुआ क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को डिफाइन या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सजेस्ट नहीं कर पा रहा था. सो उसका पहला ड्रॉबैक है ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्रेड. यानी उस समय पे जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए थे उसमें से सारे एलिमेंट्स ये टेबल में फिट नहीं हो रहे थे. तो उसके लिए after some around 60 years, new table was formed which was by Newlands. So he proposed the Newlands law of octave. Octave में पता ही है friends कि जब musical notes है उन्हें हम octave कहते हैं. So Newland ने क्या किया? He arranged the element in increasing order of their atomic weight and noted that every 8th element n had properties similar to that first element. यानी first element, 8th element, उसके बाद 16th element, ये सारे element उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी. सो द रिलेशन वाज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट दैट रिसेंबल्ड टू द फर्स्ट ऑक्टेव इन म्यूजिक. एज वी नो दैट म्यूजिक हैज 8th नोट विच इज सा रे गा मा पा धा नी सा. सो अगेन द सा वंस रिपीट. हियर द सेम हैज बीन यूज्ड concept that the first element resembles with the 8th element and the 8th element again resembles with the 16th element and the first element. So although his idea was not widely accepted at that time, but for then he was also given Davy medals by the Royal Society of London. उसे अवार्ड भी मिला था लेकिन उसका वर्क उतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ था. सो उसका टेबल हम यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड. यू कैन सी दैट द फर्स्ट एलिमेंट विच वॉज बीन लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड अगेन sodium. So he found that the lithium and sodium property always match with the, and similarly for sodium and potassium, and all these three elements have similar properties. And comparison with the modern periodic table, we can say that this all lithium, sodium and potassium are nowadays also having same property because they are from the same group. The limitation उसकी न्यूलैंड्स की जो limitation थी वो यहाँ पे लिखी हुई है फ्रेंड. यू कैन सी दैट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सेम्स टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट स्टिल कैल्शियम. यानी न्यूलैंड ने जो लॉ प्रपोज किया था वो खाली कैल्शियम तक ही चला. उसके बाद कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टीज अनमैच होने लगी. सो आफ्टर दैट द थर्ड अटेम्प्ट वाज मेड व्हिच वाज बाय लॉथर मेयर और प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट. लॉथर मेयर का जो टेबल था वो एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड था. उसकी जगह न्यूलैंड और जो डोबेनियस के टेबल थे वो एटॉमिक वेट पे ज्यादातर डिपेंड थे. अनलाइक न्यूलैंड, लॉथर मेयर ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन लेंथ ऑफ रिपीटिंग पैटर्न. यानी लॉथर मेयर का टेबल भी न्यूलैंड की तरह थोड़े एलिमेंट्स के बाद ट्रेंड शो करना बंद कर दिया. इन 1868 लॉथर मेयर हैज डेवलप्ड अ टेबल ऑफ एलिमेंट दैट क्लोजली रिसेंबल्स टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. यानी 1868 में लॉथर मेयर ने अपना जो टेबल दिया वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ मैच, यानी फुल मैच तो नहीं लेकिन क्लोजली रिसेंबल कर रहा था. सो हाउएवर हिज वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल द वर्क वाज ऑफ मेंडलीव्स. यानी लॉथर मेयर और मेंडलीव दोनों साइमल्टेनियसली ही काम कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के ऊपर, लेकिन मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल लॉथर मेयर से ज्यादा एक्सेप्टेड हुआ. The fourth attempt was by ABD. The name is very confusing. Yeah, you can see that it is ABD Canon-Cortis. So after Dobenius, the next scientist which reported the attempt to classify element was French geologist ABD. So you can see Dobenius के बाद दूसरा टेबल जो बनाया गया था वो ABD ने बनाया था. He arranged the known element in increasing order of atomic weight and made a cylindrical table. उसने cylindrical shape का टेबल बनाया to display all periodic recurrence of their property, और उनकी प्रॉपर्टी भी मैच हो रही थी. बट दिस डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन. लेकिन उसका टेबल उतना अटेंशन में नहीं आया. सो द लास्ट टेबल विच वॉज बीन मेड वॉज बाय मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. सो मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड था और मेंडलीव को इसीलिए भी फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है. While Dobenius initiated the study of periodic relation,
It was Mendeleev who was responsible for periodic law for the first time. Mendeleev पहला था जिसने periodic law की शुरुआत की, लेकिन उसके पहले भी डोबेरिनर ने उसकी स्टडी को इनिशिएट कर दिया था, यानी पहला टेबल वैसे भी डोबेरिनर ने बनाया था. So the law stated the property of elements are a periodic function of their atomic weight, यानी उसने जो टेबल बनाया वो एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था. Moving further, Mendeleev arranged the element in horizontal rows and vertical columns of tables in order of their increasing atomic weight in such a way that elements with similar property occupied vertical columns or group. यानी उसने टेबल्स और कॉलम्स टेबल बनाया जिसमें उसने कॉलम्स और रो में एलिमेंट्स को फिट किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पर, और उसने पाया कि उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी मैच हो रही थी. सो द Mendeleev सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट was more elaborated than Lothar-Meyer, यानी Mendeleev's का टेबल Lothar-Meyer से ज़्यादा elaborated था. And he also fully recognized the significance of periodic table and used broader range of physical and chemical properties to classify the element. उसने खाली atomic weight नहीं, उसने boiling point, melting point और दूसरी कई सारी properties को mix करके अपना टेबल बनाया था, और उसने एक general trend भी show किया था उसकी टेबल ने. So, in particular, Mendeleev relied on the similarity in empirical formula and properties of compound found by elements. He realized that some of the elements did not fit with its scheme of classification in order of atomic weight. उसके टेबल में कई जगह पे 2-4 एलिमेंट थे जो उसके टेबल में फिट नहीं बैठ रहे थे, but he ignored the order of atomic weight and thinking that atomic measurement might be incorrect and placed the element with similar properties together. यानी फिर भी उसने एटॉमिक वेट को उतनी प्रायोरिटी ना देते हुए उसने अपने टेबल में एलिमेंट्स को फिट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक मास देन टेरेलियम was placed in group 7, whereas टेरेलियम was placed in group 6. ये एक एग्जाम्पल है. Going further, at the same time, keeping his primary aim of arranging elements of the similar properties in the same group, he proposed that some of the elements were still undiscovered. उसने पाया जब वो एलिमेंट्स अरेंज कर रहा था तब उसने देखा कि कई सारे एलिमेंट ऐसे थे जिसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, तो उसने वहां पे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उसके लिए उसने स्पेस एम्प्टी रख दी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है गैलियम और जर्मेनियम उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, तो उसने एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम और जर्मेनियम की जगह रख दी. So if he left the gap between under aluminium and gap under silicon and called the element as eka aluminium and eka silicon. So eka aluminium का दूसरा नाम गैलियम है और eka silicon का दूसरा नाम जर्मेनियम है. So Mendeleev's prediction for element eka aluminium and eka silicon, उसका जो prediction था वो बिल्कुल right हुआ because his prediction was been matched by the modern periodic table. So you can see over here that Mendeleev's prediction has been shown for eka aluminium and gallium and germanium. Moving further, this is the Mendeleev's periodic table. You can just see over here that let us see that some of the places like here, here and here have been placed empty because the elements are not been discovered. Now you can see that the general trend is here the mass is 127 and here it is 126. You can see that here the trend has been not been followed, but the chemical properties for beryllium and iodine were some more different, so you need to put the beryllium before iodine. So ये Mendeleev's का table है friends. So friends, for today that's all. We will be meeting once again with another lightning session. Till the time, stay happy and stay study smart. So thank you friends.